morning students. Today we are going to start chapter number 4 for a revision. Firstly we start the definition of this chapter. First definition is transparent materials. The materials through which we can see clearly are called a transparent material. The material through which we can see clearly are called transparent material. Next is opaque materials. The materials through which we cannot see are called opaque materials. ऐसा मटेरियल जिसमें से हम नहीं देख सकते. The materials through which we cannot see are called opaque materials. Next is translucent materials. The materials through which we can see but not clearly. The materials through which we can see but not clearly are called translucent materials. Now choose the correct option. First is, which of the following is round shape? Orange is a round shape. Which of the following is round shape? Orange. Which of the following is not a material? Pen. Pen is not a material. Which of the following is not a material? Pen. Pen is not a material. Which of the following is not an object but is called a matter? Steel. Steel is not an object but is called a matter. Which of the following is made of iron? Iron से क्या बनता है? Pair of tongs. फिर which of the following is made of leather? Leather से क्या बनता है? Belts. जो बेल्ट बनती है वो किससे बनती है? लेदर से बनती है. Which of the following is shiny in appearance? क्या shiny होता है in appearance में? A copper. Copper is shiny in appearance. Which of the following is not soluble in water? कौन वाटर में सोल्यूबल नहीं है? चॉक. चॉक इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर. विच ऑफ फॉलोइंग इज सोल्यूबल इन वाटर? शुगर. शुगर इज फुली सोल्यूबल इन वाटर. विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स इज मिसिबल इन वाटर? विनेगर. विनेगर इज मिसिबल इन वाटर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसपेरेंट? मार्बल स्टोन्स इज नॉट अ transparent. Which of the following is not a transparent? Marble stones. Which of the following floats on water? Ice. Ice is floats on water. Now filling the blanks. First is, a plain marble is dash in shape. A plain marble is round in shape. Objects around us are made up of one or more than one dash. Objects around us are made of one or more than one materials. The door of a house is made of dash. The door of a house is made of wood. Next, cooking utensils are made of dash. Cooking utensils are made of a metal. Cooking utensils are made of metal. Materials that can be compressed or scratched easily are called a dash materials. Materials that can be compressed or scratched easily are called a soft materials. Now start true or false. First is, gold is not a metal. It's a false. Huge piece of ice sink in water. It's also a false. Metals have a luster. It's a true. Petrol is miscible with water. It's a false. Rice is edible material. It's a true. Now start one sentence answer. First is, what is similarity between oil, kerosene and water? क्या similarity है between oil, kerosene and water? The similarity between oil, kerosene and water is that they are all in a liquid state. They are all in a liquid state. Why is a tumbler not made of piece of cloth? A tumbler is used to store liquid. Liquids cannot be stored in a cloth. A tumbler is used to store liquid. A liquid cannot be stored in a cloth. Name two gases which are soluble in water. Oxygen and the carbon dioxide are soluble in water. Oxygen and carbon dioxide are soluble in water. What is the importance of oxygen gas dissolved in water? Oxygen gas dissolved in water is very important for the survival of aquatic organisms. Oxygen gas dissolved in water is very important for the survival of aquatic organisms.
नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्ट मटेरियल्स? मटेरियल्स दैट कैन बी कंप्रेस्ड बाय हैंड easily. The materials that can be compressed by hand easily are called soft materials. Materials that can be compressed by hand easily are called a soft material. List 5 materials that float on water. जो float करते हैं water पर. 5 materials that float on water are wood, plastic, coke, thermocol, sponge and रबर. ये क्या है? फ्लोट करते हैं वाटर पर. 5 मटेरियल्स दैट फ्लोट ऑन वाटर आर वुड, प्लास्टिक, कॉक, थर्मोकोल, स्पॉन्ज एंड रबर. नेक्स्ट है 3-4 सेंटेंस. वाई इज वुड नॉट यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स? फूड इज कुक्ड इन यूटेंसिल्स आर hence utensils are often heated. If cooking utensils were made of wood, they would catch fire as soon as they are kept on gas stove. Hence cooking utensils are not made of wood, क्योंकि वो कैच फायर कर लेंगे. ठीक है, जो फूड रखा होगा वो सारा जल जाएगा क्योंकि वो लकड़ी को ही आग लग जाएगी. इसीलिए हम वुड के यूटेंसिल्स में फूड को कुक नहीं कर सकते. On what basis do we sort objects? Objects are sorted on the basis of their appearance, hardness, solubility, transparency and whether it float on water or sink in it. Objects are sorted on the basis of their appearance, hardness, solubility, transparency and whether it floats on water or sink in it. On the basis we sort object. इसके बेस पर हम objects को sort करते हैं. What are the benefits of grouping materials? Benefits बताने उसके. Similar objects are placed together, making them easier to locate. Dividing materials into groups make it easier to study their properties. Grouping also help to study the patterns in the properties of the materials. It becomes easy to take stock of the materials. Also can get information about the shortfall of the materials. मटीरियल्स कौन सा कम है वो पता चल जाता है इकट्ठे पड़े हों. सिमिलर ऑब्जेक्ट्स इकट्ठे रख दे तो हमें उसको ढूंढना ईजी, देखना ईजी हो जाता है. डिवाइडिंग मटीरियल इनटू ग्रुप मेक इट इजियर टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज. उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना हमारे लिए ईजी रह जाता है. क्लियर. उसके बाद है मेरा साइंटिफिक रीज़न. द शोकेस केप्ट इन शॉप्स हैव अ ग्लास डोर्स. क्यों ग्लास डोर्स के बने होते हैं? ताकि हम उसको अच्छे से देख सकें, बाहर से हमें सब चीज़ें अच्छे से विजिबल हो सकें. इसीलिए वो जो शोकेस हैं वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बने होते हैं. ग्लास इज़ अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल. इफ द शटर ऑफ द शोकेस आर मेड ऑफ अ ग्लास, द गुड्स दैट आर केप्ट इन अ शोकेस कैन बी इजीली सीन विदाउट इवन ओपनिंग इन द शटर. कुछ ओपन करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम बाहर से उसको अच्छे से देख सकते हैं. द कस्टमर कैन ईजिली सी द अवेलेबल प्रोडक्ट एंड द शॉपकीपर कैन ईजिली सेल इट. इसके कारण वो ईजिली देख सकते हैं और शॉपकीपर ईजिली बेच सकता है. नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स एंड ऑपेक मटीरियल्स. द मटीरियल थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली आर कॉल्ड अ ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स. द मटीरियल थ्रू विच वी कैन नॉट सी आर कॉल्ड अ ऑपेक मटीरियल्स. Glass and the water are transparent materials. Iron and wood are opaque materials. Okay. Now start. Choose the match the followings. Copper. Copper को किसके साथ मैच करेंगे? Hard. Wax को soft. Glass को transparent. And mixture of water and oil do not mix. ये मैंने चैप्टर इसलिए फुल करा है क्योंकि शॉर्ट चैप्टर है और इजी चैप्टर है. कितनी बार आप इसको कर चुके हो, इसलिए मैंने आपको ये पूरा चैप्टर आज का करवा दिया, ताकि क्योंकि आपने पहले बहुत बार ही पढ़ा हुआ है और इजी चैप्टर है, इजी से आप लर्न कर सकते हो और आपने पहले भी इसको लर्न कर चुके हो. क्लियर. तो यहाँ पे आज का जो वीडियो है वो यहाँ पे फिनिश्ड होता है. नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे.